right, guys, a very good morning to everyone. Welcome to See Inter Live with रुचिका। एंड आज है महाशिवरात्रि और उस ओकेशन पे हर हर महादेव। हमारी टीम से आपके लिए गुड मॉर्निंग प्रीति चवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी ये स्ट्रीम अटेंड कर रहा है। गाइस, वन वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, करना है आपको ये स्ट्रीम को लाइक। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपने उसको भी लाइक नहीं किया है। एंड अगर आप ये सेशन अटेंड करें तो एक गुड मॉर्निंग है। इनफैक्ट आज शिव जी का दिन है तो हम कमेंट करके लिखते हैं हर हर महादेव। मैंने स्टार्टिंग में अपना कमेंट यहाँ पे लिख दिया है। सो हुएवर इज अटेंडिंग दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन, प्लीज़ कमेंट हर हर महादेव। बहुत जल्दी हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। देखो गाइज, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं एक बड़ा सा एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का ये एक्ट है। ये एक्ट के पहले देयर वर टू एक्ट्स जो आए थे विच वाज कॉल्ड फेरा। एक आया था फेरा 1947, फिर वापस से एक फेरा आया था 73 में, एंड देन फाइनली फेमा ने आके उन दोनों को रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे। और अब जो है हमारे पास ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो पहला वाला एक्ट था दैट एक्ट वाज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट में क्या था? वर्ड रेगुलेशन। सो इट वाज अ मोर स्ट्रिक्टर एक्ट। वो थोड़े ज़्यादा प्रोविजंस थे, ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था वो। बट ये जो एक्ट है ये भी स्ट्रिक्ट है, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट है, बट शायद द क्वांटम ऑफ परमिशंस जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हमने बहुत से एस्पेक्ट्स कवर किए थे। अब उनको ब्रश अप करते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैं गाइस थोड़ा सा माहौल अपन जो है सेट करते हैं। यहाँ पे आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने उसके 4 ऑप्शंस ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पोल स्टार्ट कर रही हूँ, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि फेमा एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। कौन सी डेट से फेमा एक्ट जो था वो इफेक्ट में आया था? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस। कमेंट करके मुझे बताइए विच इज़ द राइट डेट। देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो सेशन हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है उसके रिलेटेड है ये। वहाँ पे हमने समझा था कि फेमा एक्ट जो है, फेमा एक्ट 1999 दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर डेट? यहाँ पे आपको मुझे पोल में भी आंसर करना है एंड आपको मुझे कमेंट भी करना है। तो फटाफट कमेंट भी कीजिए एंड पोल में आंसर भी कीजिए। सब लोग जो भी सेशन अटेंड कर रहा है, एवरीवन हैज़ टू डू दैट। यहाँ पे मैंने 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 मई 2000, सेकेंड ऑप्शन है 1 जून 2000, फिर ऑप्शन है 1 जून 1999 एंड देन देयर इज दिस ऑप्शन 1 जनवरी 2000। सो आपको मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है इसका? चलिए, जिन लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। प्रीति का कमेंट आ भी चुका है, दैट इज 1 जून 2000। लेट्स सी प्रीति आपका आंसर राइट है या नहीं। चलिए हम पोल एंड करते हैं यहाँ पे। प्रीति आपका आंसर है 1 जून 2000 एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वो एकदम राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है प्रीति। इट इज़ द राइट आंसर 1 जून 2000। ये है हमारी डेट। देखिए, कंफ्यूज मत होना, फेमा एक्ट जो है वो 1999 का है, बट जो इफेक्ट में आया है वो कौन सी डेट से आया है? दैट हैज़ कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? इट हैज़ कम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ 1 जून 2000। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन? ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन कहाँ पे मेंशन की हुई है? तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ऑप्शन A, B, C, D में से व्हाट इज द राइट ऑप्शन। वेयर इज द डेफिनेशन? सेक्शन में कौन से सेक्शन में हमने डेफिनेशन फाइंड? हर हर महादेव जतन वर्मा, कौन सा डेफिनेशन, ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? कमेंट करके बताइए गाइस। मैं यहाँ पे पोल स्टार्ट कर रही हूँ। ऑप्शन सही देखना और कमेंट करना। ऑथराइज पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्नेहा लिख रहे हैं ऑप्शन C, प्रीति लिख रहे हैं सेक्शन 2C। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। हमें सेक्शन नंबर इंटरमीडिएट लेवल पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करने जो एटलीस्ट की सेक्शंस है उनके नंबर्स तो हमें डेफिनेटली याद होना चाहिए। यहाँ पे स्नेहा ने आंसर लिखा है ऑप्शन C विच इज़ सेक्शन 10 और प्रीति का आंसर आया सेक्शन 2C विच इज़ ऑप्शन नंबर A। चलिए, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द राइट आंसर। वेल, द राइट आंसर इज ऑफ प्रीति, इट इज़ सेक्शन 2C है। देखो स्नेहा, मैं अब आपको बताती हूँ आपका आंसर हल्का गलत क्यों है, क्योंकि
2C जो था दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन, जिसके अंदर सेक्शन 10 का रेफरेंस आता है. तो ये कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था कि डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन दी हुई है कहाँ पे, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 2C, जहाँ पे रेफरेंस ज़रूर है सेक्शन 10 का. तो उसके लिए विजिट करते वापस ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. देखो यहाँ पे हमने देखा था सेक्शन 2C गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन, जो कहता है एनी पर्सन, एनी ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. तो सेक्शन 10 में उसको अथॉरिटी मिलती है कि वो क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकता है. बट ऑथराइज पर्सन है कौन, वो कहाँ पे डिफाइन है, वो दिया हुआ है सेक्शन 2C में. सो आई होप स्नेहा आपका डाउट अब कभी नहीं रहेगा. नाउ यू विल ऑलवेज क्लियरली रिमेंबर कि 2C में डेफिनेशन है ऑथराइज पर्सन की, जहाँ अंदर सेक्शन 10 में रेफरेंस आता है. सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट ये वाला सेक्शन जहाँ पे पीपल कैन मेक एन एप्लीकेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ से वो एप्लीकेशन करके बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, दे कैन बी एन ऑथराइज पर्सन, एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जो क्या काम करते हैं, जो काम करेंगे टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़, बिकॉज हर कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता. इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव थिंग. अगर हर कोई फॉरेन करेंसी में डील करने लग गया, उस केस में तो हमारे करेंसी में, हमारे इंडिया में मल्टीपल करेंसीज का मैकेनिज्म हो जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एनकरेज्ड. One country, one currency. If you want to have foreign exchange का dealing and everything, make certain people authorized to do that. And that's why the application भी किसको देनी पड़ती है, बिग बॉस को देनी पड़ती है guys, RBI को एप्लीकेशन देनी पड़ती है. आज हम पढ़ेंगे गाइस नया एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%. Good morning, Ramya. And yes, thank you for reminding me again that I have to speak maximum of the English, and I should speak maximum of the English also, because considering it's your lock-up paper in which you'll have to write the answers also. So now we are starting, Ramya. You have not missed much. Start करते हैं आज का सेशन. Section 2E. Section 2E में we are studying the capital account transactions. Okay, so capital account transactions हम यहाँ पे start करने वाले हैं. 200% attention I would need of everyone. These are the two basic aspects. एक है अपना capital account transaction, and then we'll be studying with the current account transactions. Current account transactions यहाँ पे आएगा. I need 200% attention. Everyone, you have to be very 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 alert. So we are starting with section 2E. Section 2E, that is capital account transactions. What is the meaning of capital account transactions? A transaction which alters. The first word that is very important for us is alters. एक ऐसा transaction which alters the asset or liabilities, including contingent liabilities outside India. Okay, a transaction जिससे क्या हो रहा है? Good morning, Shu Pandit. A transaction which is altering. The word that we are using is the altering. Altering का simple basic English meaning changing. A transaction which is changing the assets या liabilities. तो even assets हो या liabilities हो, including contingent liabilities. Where are these assets? Where are these liabilities? Outside India. All these assets or liabilities are कहाँ हो रहे हैं? Outside India. किसके हो रहे हैं? Of a person resident in India. So the most important thing is, if there is a person resident in India, वो कहाँ रहता है? हमारे भारत देश में रहता है. जय भारत माता की. But एक ऐसा ट्रांजैक्शन वो पर्सन कर रहा है, और ट्रांजैक्शन विच इज़ बीइंग कैरीड आउट बाय दिस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच his assets or liabilities which are outside India. So देखो ये हमारा इंडिया, okay, ये हमारा इंडिया है. There is this person resident in India. He is doing some kind of a transaction due to which outside India, ये इंडिया के बाहर का पार्ट हो गया, यहाँ पे his assets or liabilities are getting altered. So if any transaction is being entered by a person resident in India, because of which there is an alteration in the asset हो या liabilities हो, including contingent liabilities outside India, that transaction will be called as capital account transactions. And there is a part 2 of this thing. Part 2 is plus नहीं आएगा, या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है. A transaction which alters assets और liabilities in India. अच्छा, अब कौन से asset और liability की बात हो रही है? इंडिया में. अब जो asset और liability इंडिया में है, तो अगर इंडिया में बात हो रही है तो foreign exchange की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है because now the transactions due to which there is being an alteration of assets or liabilities in India is happening of a person resident outside India. Who is this? A person resident outside India. See, the एक्ट का जो तरीका है ना, द एक्ट का जो इंटेंट स्पिरिट है वो ये है कि मुझे इंडिया से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है. ईदर इट इज़ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और द एसेट और लाइबिलिटी शुड बी इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई सेड, ईदर इट शुड बी द पर्सन who is resident in India, I am interested of the person who is resident in India, or I am interested with assets or liabilities in India.
either of these things are happening, then I'll come into picture. Who will come into picture? The boss will come into picture. The FEMA Act will come into picture. It says either I'm applicable on a person resident in India or I'm interested in assets and liabilities in India. So if this is the case, person resident in India, in that case देखो अगर इस person resident in India का कोई इंडिया में ही asset liability alter हो रहा है तो FEMA आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? Because तब तो आप इंडियन करेंसी में डील कर रहे हो. अगर इस सिचुएशन में आपको FEMA को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उल्टा चलो. योर assets and liabilities, assets या liabilities या contingent liabilities में क्या हो रहा है? Alter हो रहा है, which is outside India, right? And ये केस कब आएगा? असेट लाइबिलिटी इन इंडिया में है तो अगर कोई रेसिडेंट इन इंडिया की ही असेट्स लाइबिलिटी इंडिया में तो उससे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा. वाई? बिकॉज वो तो नॉर्मल करेंसी में डील हो रहा है. सो व्हेन विल दिस गेट इनटू कैप्चर्ड? व्हेन देयर इज एन असेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी नाउ investing his foreign currency money into our country, and that is the reason who will come into picture? The big daddy will come into picture. Cause was if all such things is happening, FEMA लगेगा. So that is the first transaction हमने समझा. Capital account transactions, very 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 important transaction. Section 2 subsection E, a transaction which alters assets or liabilities. कहाँ है? यहाँ पे कहाँ हो रहा है assets liability? Outside India. If it's outside India, who should be the person? Resident in India, obviously. या फिर which alters assets or liabilities in India of person resident outside India. This is यहाँ पे. और अच्छा, now the section also says one thing, and transactions referred to in section 6 subsection 3. So capital account transactions की definition में आता है the first part, which is this: a transaction which alters assets liabilities including outside India of person resident in India, या फिर assets or liability in India किसके? of a person resident outside India. And it says transactions covered in section 6 subsection 3. So जैसे हमने authorized person में we understood the definition of authorized person में there is a reference of section 1. Capital account transactions maybe there is a reference. There is a reference of section 6 subsection 3. So let's find out what says section 6 subsection 3. ये है हमारा section 6 which is related to again capital account transactions. जैसे authorized person के related there was specific अलग से there was one more procedural aspect section which was section 10. Accordingly capital account transactions के लिए also there is another section. capital account transactions में deal क्या होगा, permissions क्या होगा, meaning कहाँ define है? meaning तो अपना यहाँ define है 2E में, but उसके related other permissions procedures वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है section 6 में. तो अब देखते हैं हम section 6 subsection 3. तो ये रहा हमारा section 6 subsection 3 जिस पे आ रहे हैं 3 बिंदु. इसका मतलब क्या होता है guys? ये जो section है ये delete ही हो चुका है. This doesn't exist. तो very recently 2000 I guess 19 somewhere में 6 subsection 3 को delete कर दिया गया था. So effectively capital account की transactions की जो definition है वो effectively अब यहीं तक रह चुकी है. इस चीज़ का कोई relevance नहीं है. But act में mention है. So जब आप answer mention करेंगे आपको ये चीज़ quote करनी पड़ेगी. And transactions referred to in section 6 subsection 3. If somebody asks you in the exam what is capital account transactions, you have to mention all this part. Also you have to mention this part. You also have to mention this part and transactions referred to in section 6 subsection 3. Even though 6 subsection 3 अभी delete हो चुका है. Why? Because act में तो लिखा हुआ है ना. act में लिखा हुआ है, आपको लिखना है. ठीक है? act क्या हमारा बाइबल है, उसमें एक एक वर्ड एक एक भाषा हमारे लिए कीमती है. So in effect में भले 6 subsection 3 has been deleted, doesn't matter. If someone asks you this definition, you are going to write this complete part. Now ये तो हो गया theory part. Now let's take certain examples and let's try to fit those examples यहाँ पे. So there is this foreign investor है. वो foreign investor ने क्या किया? He purchases shares in an Indian tech startup. Okay, so there is this foreign investor. So हम कौन से situation के बारे में बात कर रहे हैं? हम ऐसे person की बात कर रहे हैं who is resident outside India. तो हमारी ये category आई. Person resident outside India. So this is a person resident outside India. This person resident outside India ने क्या किया? He purchases shares in an Indian tech startup. Okay, so this is my India. Okay, I have a very bad drawing, so consider this as India. And there is this US. There is a US foreign investor. He has actually bought shares. He has actually bought shares of this Indian tech company. It's an Indian tech startup, and that foreign investor has bought certain shares in this Indian tech company. Whether this will be considered as a capital account transactions. Let's see and analyze the definition. हम कहाँ पे हैं वैसे? हम बात कर रहे हैं इस situation की. Out of these two situations, कौन सी situation में हमारे लिए stand करेगा? So हमारे लिए जो relevant situation है, that is this. ये वाला हमारा relevant situation है. Person resident outside India. So okay, so this is the foreign investor.
is a transaction which is happening, is the transaction that is happening is altering my assets or liabilities in India? Let's see. So yes, it is altering the assets or liabilities in India. Why? Because what is the underlying asset? The underlying asset is the shares of this Indian tech startup. So it's an underlying asset, and this asset is getting altered. This is यहाँ पे उसके sorry, the person resident outside India के assets are getting altered. कौन से assets which are in India? Is this asset in India? Yes, it is an asset in India. Why? Because it is an Indian company shares. Simple. So is this a capital account transactions? Bingo, it's a capital account transactions. Cleared? Guys, अगर आपको कुछ भी confusion है, if you are facing any confusion, please mention that confusion, and अगर अभी तक का explanation it is absolutely clear, then please mention yes, it is clear. Otherwise, I'll have to change, I'll have to explain it again. So if it is clear so far, please यहाँ पे comment कर दीजिएगा yes, it is clear. So this was the case. Yes, this was the case of capital account transaction. Foreign investor, person resident outside India, a transaction which is altering asset or liability in India. Yes, so it's a capital account transaction. Why? Because these shares are of an Indian tech startup. Let's take one more example. So there's a domestic real estate company. And this domestic real estate company borrows funds from a foreign company. Okay, so there's a domestic real estate company. Now हम इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया में there is this real estate company. तो who's the person right now? The person is resident in India. तो हमें कौन सी कैटेगरी की बात करना है? अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा. So now we'll shift our focus to where? We'll shift our focus to this place. We will shift our focus to person resident in India. इस केस में capital account transaction कब होगा? A transaction that alters assets or liabilities including contingent outside India. Is that happening? Let's find out. So a domestic real estate company borrows funds. It borrows funds from a foreign company. Thank you Zeel Shah for writing yes, it's clear. Everybody else also, if it is clear, please mention just like the way Zeel has mentioned that yes, it's clear. Guys, देखो online lectures में यही fun होता है, यही fun होता है. अगर आप अभी physical class में होते, आपको बार बार हाथ खड़ा करना होता, clear होता, वो होता. Just mention it that yes, it is clear, so that you know we get a good feel कि yes, the lecture is सबको समझ में आ रहा है, and कहीं भी confusion होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you so much Zeel for writing yes, it's clear. So हमारा example है next, a domestic real estate company. There it's a domestic real estate company. It borrows funds from a foreign company. अच्छा, फॉरेन कंपनी से वो बोरो कर रही है फंड्स टू फाइनेंस अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. थैंक यू प्रीति, थैंक यू आकांक्षा फॉर राइटिंग येस इट इज़ क्लियर. सब लोग लिखे गए, सब लोग लिखिए, थैंक यू सो मच. तो अगर आप रियल एस्टेट कंपनी इंडिया में है, बाहर से आप पैसे ले रहे हैं, फाइनेंस लार्ज स्केल प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन करें, दूम की क्या कवर हो गए? 100% हो गए. वाई? बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया. अ ट्रांजैक्शन इट इज़ ऑल्टरिंग द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर आउटसाइड इंडिया. सो दैट वॉज द केस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अनदर सेट ऑफ डेफिनेशंस. टुडे वी आर ट्राइंग टू कवर लॉट ऑफ डेफिनेशंस वाला पार्ट. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे भी हम आएंगे, बट उसके पहले लेट्स सी सर्टेन चिंटू मिंटू डेफिनेशंस. So now the definition that we have is to H currency. Currency का meaning क्या होता है? It includes all currency notes, postal notes, postal orders, money orders. Okay, let me I'll come back to this money order वाला part also. Check, drafts, traveler's check, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC जिसको कहते हैं इन बिजनेस टर्म्स में. इफ़ योर फादर मदर आर इन बिजनेस, आप उनसे कभी पूछेगा डू यू नो थिंग्स लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, दे लेट यू नो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, अकाउंट्स का पार्ट, हाँ, जिससे हम सब लोग जानते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, एंड कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी आता है. क्रेडिट कार्ड्स सबके पास ही आई गेस, और सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज में बी नोटिफाइड बाय RBI. सो देखो, जब भी हम फेमा में बात करेंगे, नाउ अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 200% फोकस अटेंशन आई नीड व्हेन आई टॉक अबाउट करेंसी. द करेंसी इन जनरल हमारे दिमाग में क्या दिमाग में आता है? इंडियन रुपी इन जनरल, लाइक डोमेस्टिक करेंसी, इंडियन करेंसी, या फिर डॉलर, या इस तरीके से, राइट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फेमा, द फेमा एक्ट हैज specifically mentioned that in our act, whenever the word currency is used, the definition of currency is this: you cannot take any definition in just layman terms, या कोई आप अपनी कोई डिक्शनरी के टर्म्स में करेंसी नहीं पढ़ोगे. सो आप अगर डिक्शनरी ओपन करते हो, इफ यू ओपन द डिक्शनरी, सपोज यू ओपन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ करेंसी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट करेंसी डेफिनेशन, दिस करेंसी डेफिनेशन डज नॉट मैच. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इधर उधर कुछ एक चीज़ हो सकती है. बस जो फेमा एक्ट है, वेनेवर जब भी कोई लॉ बनता है, वेनेवर द लॉ इज मेड, वेनेवर द एक्ट इज मेड, इफ दे आर वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग सर्टन वर्ड्स, that word has to be used in that sense only, so they'll define that word itself in the definitions, and that is why a definition has been given for the word currency as well, जो otherwise हमें लगता है ये तो इसका मतलब क्या होता होगा, डॉलर, रुपी, यूरो, इस तरीके से. So it is not like that.
FEMA Act के हिसाब से the definition of currency is this, and when FEMA Act has given the definition of currency as this, whenever in the FEMA Act the word currency is used, or say only currency is used, okay, it is not foreign currency, Indian currency, it is just currency that is used, so uska meaning you have to assume it as that it is a currency note. It includes all currency notes, postal notes, postal orders, money orders. There was a time back then, like you know, बहुत टाइम पहले की बात है, हमारे बचपन के टाइम में, then there was a concept of money order, and I guess today also it is quite relevant lot of places में. So sometimes आप पोस्ट ऑफिस जाते थे, so I'm talking about two aspects यहाँ पे, postal order and money orders. टेक्निकली दोनों में शायद थोड़ा फ़र्क होगा, बट जो अंडरलाइंग एस्पेक्ट है वो यही होता है दैट यू गो टू द पोस्ट ऑफिस. यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, सपोज यू आर इन अ पर्टिकुलर टाउन, you are in a particular town, and this practice used to happen a lot in, you know, districts, in villages where people didn't have much of the banking facilities, and there they wanted to send some money to their people, right? They wanted to send money to their families. So the person was working, say for example, the person was working in Surat and he has a family. He had a family in Mehsana. There's a good small village in Gujarat which is called as Mehsana, and there's a worker who is working in Surat. Now he wants to send certain money to the people, to the family who lives in Mehsana. And back then there were not many banking facilities. Right now it is UPI, Google Pay, everything is there, but that time it was not prevalent. People didn't much have the bank accounts also. So at that time post office used to come into picture. Who used to come into picture? Post office. डाकिया डाक लाया. So जो डाकिया था वो डाक ही नहीं लाता था, डाकिया आपके लिए पैसे भी लेके आता था, खुद की जेब से नहीं, जिसको भेजने उसकी जेब से आते थे. So what Mr. A used to do is he used to go to the post office, he used to give the money, and then a money order was sent to this members, and वो फिर वहाँ के post office से जाके पैसे collect कर सकता था. So how the arrangement used to happen? Mr. A used to give money to this post office. पोस्ट ऑफिस के आपस में अरेंजमेंट्स होते थे, और ये जो मेंबर होता था वो उस लोकल पोस्ट ऑफिस पे जाके ही यूज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दैट पोस्ट ऑफिस, एंड देन दोज पोस्ट ऑफिसेज, ये पोस्ट ऑफिस है महसाना का, ये है सूरत का, वो फिर आपस में एक्सचेंज वगैरह कर लेते थे. ऑल दोज थिंग्स यूज टू हैपन. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मनी ऑर्डर. सो दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एट दैट टाइम पे. लॉट ऑफ पीपल यूज टू डू दैट, एंड स्पेशली व्हेन द बैंकिंग फैसिलिटीज वर नॉट prevalent that time. So that was a concept which I thought to share with you. Checks आप सबको मालूम ही है, drafts you all know, travelers checks. So there was this concept of travelers check also. Right now अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, there is a concept called forex card. So now when you travel abroad, the first example when I gave in the session that you go to the airport, you give them the Indian rupee and they'll give you the dollar. Suppose you're moving to US. Now say for example you do not want to carry so much of cash also, so what you can do is you can load the dollars in your card, and आपके लिए एक स्पेशल कार्ड बनता है which is forex card. बिकॉज देखो इंडिया का जो कार्ड होता है, अनलेस इट इज़ सम इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स में भी बहुत अलग अलग वर्जन्स आते हैं, यू कैन नॉट स्वाइप इट इन दी आउटसाइड द कंट्री, राइट, क्योंकि द अंडरलाइंग वैल्यू इज इंडियन रूपी. सो व्हेन वी ऑल्सो ट्रैवल टू यूएस, हमने क्या किया था, हमने एक फॉरेक्स कार्ड बना लिया था. सो वी ट्रांसफर्ड द dollars into that forex card, so that whenever we have to use, we can use that forex card in USA whenever we have to buy something, pay for anything XYZ thing, because we didn't want it to carry so much of dollars. It is always risky to carry currency so much in cash, so we use the forex card. तो देखो जब तक फॉरेक्स कार्ड का कंसेप्ट नहीं था, द कंसेप्ट वाज ऑफ ट्रैवलर्स चेक. तब एक ट्रैवलर्स चेक का कंसेप्ट होता था कि आप चेक में आप पैसे लेके जाते थे, एंड कहीं भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उसके थ्रू आप कर सकते थे. Then bills of exchange, very easy, promissory notes, credit cards, etc. as notified by RBI. So that was the definition of currency. It can be asked you in the exam. It can be asked you in the examination. What is the meaning of currency? Exactly यही words आने चाहिए. Then the definition of currency notes. It means and includes cash in the form of coins and bank notes. Now we have a new currency also. New मतलब नए वो 10 रुपए के 20 रुपए के भी coins आने लग गए हैं, जो हमारे टाइम पे पहले नहीं आते थे. So currency notes में the definition is means and includes. देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लॉ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे the word that they use is currency includes. यहाँ पे they say the currency includes, and whenever the definition is something like includes, you will always see or such other similar instruments as may be notified. So when there is a huge scope which is possible, हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं, वर्ड डेफिनेशन में इंक्लूड्स. बिकॉज कल को क्या होगा, इसके अलावा ऑल्सो करेंसी कैन कम फॉर्म इन सम अनदर पार्ट, जैसे कि अभी गूगल पे है, यूपीआई है, एग्जैक्टली.
similar things. So that is the reason in the definitions you use sometimes the word includes and sometimes you use the word means and sometimes you use the word both. And वो both वाला कौन सा आया? Both वाला आया this. Currency notes means and includes cash in the form of coins and banknotes. So cash किसके form में आप रख रहे हो? In the form of coins. So when you are keeping the like आपके जो notes होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमेशा करेंसी नोट्स. और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स. मीनिंग भी है और उसमें इंक्लूड कौन कौन है? ये सब चीज़. तो हम इसे सिर्फ मीनिंग कैश नहीं बोल रहे, इट इंक्लूड्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स. परफेक्ट. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. अगेन 200% फोकस, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए. वी आर नाउ स्टडिंग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इज गिवन इन सेक्शन 2J. कौन सा है ये सेक्शन? 2J. ओके. Capital account transactions, we are very clear. Capital account transactions. Now we are studying current account transactions. Lot of questions can be asked from current account transactions also. So a transaction other than a capital account transaction. Okay, so the first line ही क्या है यहाँ पे? The first line itself is what is current account transaction? एक ऐसा transaction which is other than a capital account transaction. Capital account transaction के अलावा without prejudice in generality of foregoing such transactions and includes. Now comes the important aspect कि यहाँ पे if somebody asks you current account transaction meaning any transaction which is other than a capital transaction and includes. Now we have to study these four important transactions in very detail with lot of examples. Okay, so एक transaction जो capital account transaction नहीं है and उसमें उन्होंने include करके certain categories बताती है. इनके अलावा के categories भी quite possible हो कि वो current account transaction हो सकती है if it is not a capital account transaction. So देखो, FEMA में a transaction can be either current account or it can be a capital account. It has to fall under one of the thing, because if there is no transaction, the FEMA is not getting applicable also. FEMA is getting applicable when there is a transaction, when there is a foreign currency ka exchange, movement is happening place. So you have a foreign currency ka transaction, they have a foreign currency ka transaction, the foreign exchange is coming into picture. Now you have to figure it out, is it a current account transaction or is it a capital account transaction? This is like, you know, the main part, the crux part, because यहाँ पे confusion हुआ, then all the permissions will got wrong, all the permissions, everything will get wrong. So the first thing is FEMA applicable हुआ, that means some transaction has happened played. कौन सा transaction where foreign money is involved? So now you have to figure out, is it current or it is a capital account? Capital कौन है? Which alters assets liabilities outside India of a person resident in India, या फिर assets liability in India of a person resident outside India, and include section 6 subsection 3 जो delete हो चुका है. So capital account transactions हमको आ गया. अब आ रही आती current account की. तो current कौन है? Other than capital account transactions and includes 4 important categories. My first category. What is my first category, guys? Payments due in connection with foreign trade. एक एक word बहुत important है. Payments due in connection with foreign trade. Other current business, services and short-term banking and credit facilities in ordinary course of business. What all the words are important? Every word is important. Foreign trade, other current business, services and short-term banking and credit facilities in ordinary course of business. Now, before moving on to the examples of this thing, यहाँ पे we have taken this example. A domestic real estate company borrows funds from a foreign company to finance a large-scale construction project. The example that we had in this, the example that we had here was the money was being taken to finance a large-scale construction project. So that was a kind of a long-term borrowing. That was a kind of long-term borrowing, and that's why it was coming into effect of capital account transaction. If you see the definition यहाँ पे लिखा है assets और liabilities. That means liabilities also coming into picture. But in general हम समझ में आया यहाँ पे the liabilities का मतलब यहाँ पे liabilities का कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे long term होगा. Why? Because current account transaction is saying short-term banking and credit facilities in ordinary course of business. Say अपने financial management में you have understood a concept. You must have understood a concept called as working capital loan. Working capital loan आप लेते हो. What is working capital loan? A loan that you take for, you know, meeting your ordinary day-to-day activities. So all those short-term banking and credit facilities which is in ordinary course of business, all those will come into picture of current account transactions.
Otherwise, it will go into capital account transaction. So जब आप बड़ा long term borrowing ले रहे हो, there goes to capital account. But if it's a short term borrowing, छोटा मोटा amount है, credit facilities है ordinary course of business में, then where will you come? Current account transactions. दूसरा, payments due in connection with foreign trade, other current business services. So let's take certain examples of these also. Payments due in connection with foreign trade and businesses. This includes payment related to international trade, business activities, covers transactions such as purchase of goods and services from foreign suppliers, payment for exports to foreign buyers, expenses incurred in normal course of business. Let's take certain examples. There was this Indian electronics retailer imports smartphones from China. So we have Mr. बंसी यहाँ पे. मिस्टर बंसी है इंडिया में ही कहाँ पे काम करते हैं? ही वर्क्स इन इंदौर. व्हाट डज ही डू? ही इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना. वो चाइना से क्या लेते हैं? स्मार्टफोन्स लेते हैं. ही इम्पोर्ट्स चाइना से स्मार्टफोन्स एंड देन वो यहाँ पे उसको लोकली बेचते हैं. नाउ व्हेन यू इम्पोर्ट सर्टन फोन्स फ्रॉम चाइनीज सप्लाई, ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक दम पेमेंट. सो व्हेन यू मेक द पेमेंट टू दीज चाइनीज सप्लायर्स फॉर द परचेज स्मार्टफोन्स, यू फॉल इन टू विच कैटेगरी? पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड एंड बिजनेस. इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है, दिस इज अ करंट अकाउंट. दिस इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. दिस इज नॉर्मल imports happening in your return course of business. Current account. Second, a software development company in India. Okay, again, a company in India, it exports its software services to clients in the US. So now you're exporting the services to the clients who are in US. So now you have a right. इस केस में चाइना से आप import कर रहे थे, यहाँ पे US में आप क्या कर रहे हो? You are giving certain services, software development services you are giving in USA. Obviously they are your clients, they'll pay you money, they'll pay you dollars, but then it will come to you in form of Indian rupees. So that kind of a transaction is this current account transactions. Why? Because it is in due with foreign current trade and business. Third example, business travel expense. So in an Indian pharmaceutical company, okay, now who's the picture person resident in India? Indian pharmaceutical company है. It sends its employees on a business trip to medical conference in Europe. क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए ऐसे employees के लिए, ऐसी कंपनी के लिए who is doing so much for the employees. So it sends its employees to a medical conference in Europe. Now when you send them to Europe, obviously it is not a free thing. You have to pay for the airfare, accommodation, meals. So when all those expenses are met, they are called as current account transactions because it is in the nature of your business trade. So anything and everything which is related to your foreign trade, which is related to your business, where will it come? It will come into current account transactions. And even the borrowings part, if it's a short term thing, it will come here in the foreign trade and business part wala. Next हम देखते हैं guys, next thing that we have is payments due as interest on loans and not income as net income from investment. So when you have to make certain interest payment on loans or net income from investors you receive, that also come here. Okay, so this part involves payments related to loans and investments. So basically either you take loan or you do certain investments. If you take loan, you have to pay interest. If you do certain investments, you get dividend income or you get some other kind of income, maybe interest income. You get some income from the investment. So interest on loans and income from investments wala part, it includes the payment of interest on loans obtained from foreign sources and the income generated from the investments made abroad. Okay, so if आपने फॉरेन से लोन लिया था, जैसे हमने वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लिया था, हमने क्या किया था गाइस, देखो वापस से इस एग्जांपल पे चलते हैं. सो व्हेन द डोमेस्टिक रियल कंपनी takes loan from the foreign company, that transaction is capital account transaction. Now for this loan that he has taken, he has to make the interest payment also. So when the interest payment is being done by this real estate company, that interest payment kahan pe aayega? That interest payment will come into current account transactions. Why? Because interest on loans wala category we have in the current account transactions. So an Indian manufacturing company borrows funds from US bank to finance its expansion. The interest payments will be current account transaction. Ye jo borrowing wala part hai, this will go into capital account transactions. Again, an Indian investor holds shares in US company, like we guys also, हमारी family में भी there is a lot of stocks which is being held in, you know, US companies, Apple, Google, Nvidia, all those companies के we have a lot of stocks. So whenever these companies pay us dividend, they will receive the dividend. So that dividend income for us will be part of what? It will be part of current account transactions. Next हम चलते हैं third case, third scenario. तो यहाँ पे हमने दो सिनेरियो कवर किए. थर्ड वी हैव रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड. सो लॉट ऑफ टाइम्स अ पर्सन इज वर्किंग, you know, far from the family, and that time he has to pay to the family again, you know, remittance, so that, you know, they can survive, they can meet their living expenses. So that part is also covered in current account transactions. Let's take certain example. So an Indian working professional
आप यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ही सेंड्स अ मंथली रेमिटेंस टू देयर पेरेंट्स हु आर लिविंग इन यूके. सो यहाँ पे देयर इज दिस इंडियन पर्सन हु is working here, he sends a certain monthly remittances to his parents in UK. The funds sent for their parents, housing, food and other expenses are considered current account transactions. So this is my third category. Every word is important. Fourth, expenses in connection with foreign travel, education and medical care of parents, spouse and children. So यहाँ पे again we have various categories. Expenses for foreign travel, education, medical care. So we have 3 categories. First category is foreign travel. So when you spend funds on vacation, business trips or other travel related expenses abroad, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. Next we have is education, tuition fees and living expenses for children studying in foreign universities. So a lot of times people move to Canada, USA, UK. These are like the hot spots for the Indian students. When they go there, they spend so much of money. So their tuition fees, their living expenses of children who are studying in foreign universities or education institutions, all those things will come from where? Current account transactions. Medical care. So medical expenses for family members receiving treatment abroad. If there is some medical expenses are being incurred, अगर आपके कोई members they are staying abroad, तो उनके जो खर्चे लगते हैं, that is also covered यहाँ पे current account transaction. So an Indian family goes on vacation to Thailand, क्या बात है, and spends money on accommodation, sightseeing, dining, all these related to current account transactions. So this was an example of foreign travel. Education. An Indian student studies at a university in US. The tuition fees, living expenses, all considered current account transactions. Medical care. A person from India travels to Singapore for a medical procedure. These medical including hospital bills, treatment costs, ये सब कहाँ पे आ जाएगा? These will fall form of current account transactions. Perfecto. So now we have understood the definition. See, that is how you have to study act. That is how you have to study the act. Each and every word के जितने आप examples बना सको, ले सको, find कर सको, that is the way you should study act, because then and only आपको हमेशा law पूरा याद रहेगा. And guys, before that I have to tell you one more thing. Recently I have shared a video on our Instagram channel. Do follow me, do follow Yash sir, and do follow the Concept page also. These days we are uploading lot of content which is specific to your studies. आप अपना schedule कैसे बना सकते हैं, आप कैसे Instagram पे time waste नहीं करके भी Instagram को अच्छे से use कर सकते हैं. All those things, there is amazing content that is appearing. So I would really request you कि आप please भले Instagram ऐसे मत कीजिए, but do follow sir, me and our channel for the specific content that we are building for, putting it there for CA Intermediate, CA Foundation, CMA Intermediate, CMA Foundation. तो वहाँ पे अभी have recently added a video जहाँ पे I have given you the first trick. I have given you the first trick how to remember law. किस तरीके से आप लॉ को रिमेंबर कर सकते हैं, उसके अभी 2 पार्ट्स और आने वाले हैं, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा. उसमें आई हैव गिवन यू अ क्लियर हिंट कि आप किस तरीके से लॉ को पढ़ सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, राइट. सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन यहाँ पे फिनिश होते हुए 2J में हमने समझा अ ट्रांजैक्शन विच इज़ अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स. व्हेन आई से इट इंक्लूड्स, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट देयर माइट बी कि इनके अलावा भी कोई और ट्रांजैक्शन निकल के आ सकता है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ क्या देखना है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. एंड उन्होंने एक जनरल कैटेगरी बना दी दैट इट इंक्लूड्स ये 4, बट इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या. सो इसके अलावा भी, ओके रामी, आई कम बैक टू इंग्लिश अगेन. सो यहाँ पे a transaction which is other than a capital account transaction and includes payments due in relation to foreign trade वाला part, then interest on loans वाला part for the medical living expenses, then living expenses, and then medical treatment, travel and education. So all these aspects come here, but इसके अलावा also there can be a certain transactions which is not a capital account transaction and which is also not covered in all these 4 categories, but can it be a current account transaction? Yes. Why? Because in the definition I am writing and includes, I am not writing means. Had I written only means, then in that case we would have been strictly following these 4 aspects, but we know that यहाँ पे the scope could be immense, and that is why when the lawmakers draft the laws, they try to use the word includes, because in that case the coverage becomes wide. Any other new transaction which might not have thought at that time when the law was made can still be covered under this ambit, right? So that was all about current account transactions. Next definition we have is export. Export का definition is given in 2 subsection L. 2L में हमें दिया हुआ है. So 2L says
with its grammatical variation and cognate expression, export means taking out of India to a place outside India any goods. So it is related to goods first aspect, या फिर it is related to services. So export का in general जो meaning है वही यहाँ पे समझाया हुआ है. There's nothing different definition. So the export का meaning क्या होता है? When you take out of India any place outside India any goods, or you provide any services to any person outside India. So either you are sending goods outside India, or you are providing any services from India to any person outside India, right? You'll ask me, how do you provide services? So abhi to we are in the area of technology, we are in the area of AI. Everything is possible. Services provision is also possible. In fact, guys, you'll be amazed to know that all the US, the Indian, there is a lot of Indian tech companies. Just there's a big names also like Tata, TCS, Infosys. All those are big names, but there are a lot of small companies also which might not be as mammoth the size of Tata and Infosys, but they are doing immensely great in the field of technology. They are called as the IT companies again, and their major clientele is based in USA. So just imagine the kind of business US companies are doing, because of which they have so much of software requirements, and those software requirements they are taking from India, because yes, we provide them at the most affordable prices, we provide them at the best rates, and that is why India is emerging as a, it's not even emerging, it is always a big IT hub. It has always have been a big IT hub because of the fantastic IT services that we provide. And one of the example is again in front of you also, the Concept Education app, which is a smooth app, one of the smoothest app. The smart practice which we are going to launch very very soon, hopefully before May we are able to launch it for you guys, and all that has been possible because of our in-house IT team. And यहाँ पे I would like to thank Sachin and Ruchit, the IT duo we have in the organization, who are the sharp brains behind providing you the best of the best app, best of the best interface, neatness, stories, all those things the guys are handling. So the services provision can happen from India also to any person outside India if you have the right brains with you. So export ki definition mein there is goods and there is services. Perfect, guys. Next we have the definition of foreign currency. So foreign currency means any currency other than Indian currency. So हमारे लिए रुपए के अलावा anything and everything is foreign currency. It is dollars, it is euros, it is yen, it is yuan. All this is what foreign currency. So means, अब यहाँ पे definition क्या है? Means मतलब इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है. So foreign currency की definition is given in 2M. It means any currency other than Indian currency. Indian currency कौन सी हुई? Means currency which is expressed or drawn in Indian rupees. Now it says currency again. So currency की definition के लिए currency पे जाओ. Currency includes, क्या क्या include करता है currency? Currency includes all currency notes, postal orders, fish. तो यहाँ पे करेंसी था, अब आते हैं हमारे पास इंडियन करेंसी. यहाँ भी फॉरेन करेंसी था, अब आ रही है इंडियन करेंसी. तो मीन्स करेंसी विच इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? विच इज एक्सप्रेस्ड इन इंडियन रुपीज. इट इज एक्सप्रेस्ड इन इंडियन रुपी. सो इंडियन रुपी में जो एक्सप्रेस्ड है दैट इज इंडियन करेंसी. But it does not include special bank notes and special 1 rupee notes issued under section 28A of RBI Act 1934. You have to remember this part also very nicely. It means currency which is expressed in Indian rupees, but it does not include few aspects. Special bank notes nahi aayega, and special 1 rupee notes. Special 1 rupee notes issued under section 28A. You have to memorize this. Special bank notes and special 1 rupee notes. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ अ 1 rupee नोट इन द हाउस. कमेंट कीजिए यहाँ पे इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ 1 rupee नोट. In fact, guys, I'll be telling you very honest thing. When I got married, my dadaji, my granddad, actually gave me 1 rupee का गड्डी. So I hope you are familiar with the concept of गड्डी. Okay, one गड्डी is basically 100 notes उसमें हमेशा रहते हैं. How many notes are there? 100 notes are there in any kind of a gaddi, right? So when I got married, as a gift, like besides other gifts that Dadaji gave, one of the important gift that he gave me was a 1 rupee note ka gaddi. And trust me, guys, it has such a nice value. It has such a nice memory associated. It is crisp, everything very neat and beautiful it looks. So that reminds me that how many of you, please comment karke if you have that 1 rupee note in the house, or if you have 1 rupee ka gaddi, anything if you have seen, please comment zarur kijiyega yahan pe that yes, I have seen the 1 rupee note, or I have that 1 rupee note in the house, या that gaddi is there, because it has, you'll realize कि अच्छा वो 1 rupee का note इतना छोटा होता है, and it looks so beautiful, it looks so nice. And that 1 rupee note, I don't know why, but they have not included in this Indian currency का definition.
It includes everything which is expressed or drawn in Indian rupee, but it does not include special bank notes and special 1 rupee notes issued under which section 28A of the RBI Act. चलिए, moving on towards the next definition, we have foreign exchange. Foreign exchange का मतलब क्या हुआ? So देखो, starting में हमने पढ़ा था foreign exchange was a mechanism in which you changes. Ramya लिख रहे हैं, I don't have in hand, but the notes are, but I have 25 paisa and 50 paisa coins. Okay, wow. That's also lovely thing, 25 paisa and 50 paisa coin. In fact, very recently, some years back when our great-grandfather passed away, so, we were just seeing the cupboards and everything. We come to know a lot of stuff, and वहाँ पे हमें पता चला that Dadaji had such a big collection of paisas. And at that time, we saw the paisa of पाँच का paisa. Like, it's not 5 rupee coin. It's a 5 paisa coin. So, it had 5 paisa coin. It has 10 paisa coins. Like, Ramya, you have 25 paisa and 50 paisa. Dadaji had a huge collection of 5 paisa and 10 paisa coin. And it was, because he was so fond of currency. And whenever, whichever country he used to travel, he used to make sure to, collect those coins, collect those currencies, and kept it very nicely. And now, of course, the finance manager of the house, your Ruchika ma'am, is keeping all those coins and currencies very safely with her. But even I am very fond of, collecting all those coins and currencies. If you are also fond of it, please mention it here. So, Ramya, you have 25, 50 paisa coins. I do have 5 paisa and 10 paisa and also the 25 and 50 paisa. Great. Chaliye. Foreign exchange का in general हमने meaning समझा था that foreign exchange is a mechanism where you give your currency, get another currency. Now technical definition has been given in section 2H of foreign exchange. Foreign exchange का meaning, it means foreign currency and includes. Again कौन आ गया यहाँ पे word? आ गया कहाँ यहाँ पे word हमारा and includes. So it means foreign currency and includes deposits, credits and balances payable in any foreign currency. So if there is any deposits, credit, balance payable in any foreign currency, drafts, travelers checks, letter of credit, banks, institution of persons outside India but payable in Indian currency, okay, expressed as drawn in Indian currency, या फिर वापस से ये part repeat हो रहा है guys, this part, drafts, travelers checks, this thing, it is expressed or drawn in Indian currency but payable in any foreign currency. So देखो foreign exchange का यहाँ पे meaning वही निकल के आ रहा है. क्या निकल के आ रहा है? पहला part, if there is any deposits, credit, balance in any foreign currency. Second part अब देखना, ऐसे drafts, ऐसे checks which is drawn outside India but payable in India. वो ड्रॉ किसने किया है उसको इंडिया के बाहर? जैसे पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर इज अ ड्रॉ, देयर इज अ ड्रॉई, दो बोथ द पार्टीज आर इन इंडिया, बट इन दिस सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग, द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द चेक ही इज आउटसाइड इंडिया, but it is payable to a person in India. It is payable in Indian currency. It is not necessarily payable to person in India. It is necessary that it has to be payable in Indian currency. So even if you draw a check in dollars, but if it is payable in Indian currency, अगर वो Indian if you draw a check outside India, if you draw a letter of credit outside India, but if it is payable in Indian currency, it will be considered foreign exchange. Similarly, if you draw anything in Indian currency, but it is payable in any foreign currency, so if you draw a check यहाँ पे, but if it is payable in US dollars, उस केस में it will be considered as foreign exchange. उस केस में again it will be considered as foreign exchange. So that is the definition of foreign exchange. Foreign exchange means foreign trade, foreign currency, and includes what all things? Deposits, credits payable in any foreign currency, and those two important things, या तो drafts and everything payable outside India, drawn outside India but payable in Indian currency, या फिर flip. What is the flip? Traveler's check, letter LC, drawn in Indian currency but it is payable outside to any foreign, but payable to any foreign currency. So that was all for today's session guys. आज का session हम यहीं पे end करते हैं. We have done till foreign exchange की definition. Still the chapter is too big to cover. And this is the part foreign security. This is all again a different part which आज का time हमारा ख़त्म होता है. We have other further sessions that are lined up. Ramya, you're writing. Let's read the Ramya's comment. Your handwritten notes are simple. Connect with the notes, photo or PDF form. See, the lectures are available. There's one thing I'll tell you why I do not want to share these notes which we have mentioned here, because this is a very simple part and there's a very easy way we have given you. I really want you guys also, to make such kind of notes. Please do make such kind of notes in the most simplest form in those things, because if we just give this now, you will not have that
practice of writing it on your own for the first time. And that is why I always encourage students that okay, we provide you lectures, we give you everything. Zeel आप लिख रहे हैं, I have ₹1 note. Well done Zeel, क्या बात है. So coming back to the notes part, I always encourage students that okay, if you want you can just copy these also from us, but I will not give you directly these so that you can just read. यो आपका जो first hand written practice है ना वो होना ही पड़ेगा. So Ramya, I just request you one thing. I can suggest you one thing. If you want, you can just note down all these things which I have mentioned here in my notes. But exactly doing this will never happen because that first time written practice has to come from your end. So let's end guys today's session यहाँ पे. We'll meet again. Today is I guess Friday. The next session is going to happen on Tuesday perhaps. We'll notify you in the application. Saturday, Sunday we are not having. Saturday is for foundation students, and we'll most probably meet on Tuesday again. So Tuesday might be our session. The exact date I'll confirm in the application. Do visit our application. You are already studying on the application any which ways. So let's wrap for the today's session. It was a wonderful session. If you guys have any doubt, please mention it यहाँ पे, and if it is very clear, please mention that as well. Till then आपको क्या करना है, नोट्स अपने बनाने हैं. You have to start studying, keep studying. जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, and I hope the mentor facilities which we are providing, it is helping you all in a big manner. If you feel any improvisation needed, any suggestion needed, do mention it. And do visit our app. क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस आप वहाँ पे करते रहिएगा. दूसरे सब्जेक्ट्स की भी आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा. चलिए guys, signing off for the today's session. It was a wonderful session. See you all again most probably on Tuesday. Bye bye. Take care.